तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेमिनार में क्लासिकल ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। जैसा हम सबको पता है, ये सेमिनार प्रत्येक फ्राइडे को हम सब करते हैं, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से पिछले शुक्रवार को यह नहीं आयोजित हो पाया। तो हमने सर से रिक्वेस्ट की कि इसको हम लोग इस हफ्ते जरूर करें और शनिवार को कर लेते हैं। तो हम सर से ये अनुरोध करते हैं कि जितनी चीजें पिछले दिनों में हुई और कुछ चीजें रिकॉल करते हुए अगर उसे हम लोगों को बताएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सर, थैंक यू स्वप्निल। अब हम कुछ लास्ट टाइम जो किया था, सो एक्चुअली द पर्पस इज द रिप्रेजेंटेशन थियरी of classical groups. So the representation theory, the character theory of representation theory actually depends on the conjugacy classes. The characters are actually, the values of the characters are invariant under the conjugacy classes, and the characters determine the representation in some sense. So therefore, one has to parameterize the conjugacy classes of groups. So we were trying to do the same thing for a Lagrange group, a positive Lagrange group. For orthogonal group, we have already done earlier. So for positive Lagrange group, so what is about positive Lagrange group is our SO plus a special positive Lagrange group, SO plus 1n. So this, as you know, you remember that this is just a member of GL n plus 1r, such that a j1n. So I'll explain a j1n. A transpose is J1n. So that is the set of all such matrices with further it is such that I'm taking the determinant also to be 1. It is a special one. So determinant A is 1 and it is positive. So positive means it takes the upper part of the hyperboloid to the upper part of the hyperboloid, which is indeed equivalent to say that E1 of A. So E1 is 1 0 0 0, that matrix that and that E1 you take the inner product, the standard inner product, the Euclidean inner product. So that is greater than 0. So positive part. So E1 is on the positive part, 1 0 0 0. So it is not on the lower part. That is the vertex. E1 is the vertex of the hyperboloid. So that vertex of the hyperboloid goes somewhere, but then that goes to the positive thing. E1 is greater than 0. So that is the SO1. So this is what is called the Lagrange group. Usually we call it the special positive Lagrange group. So this is special positive Lagrange group. We have already discussed positive Lagrange group, and we have already discussed the group of that it appears as a group of isometry of the hyperbolic n space. So this is positive Lagrange group. So we are trying to see what to describe the conjugacy classes of SO plus 1n. तो मतलब ये कि कोई भी पॉजिटिव लॉरेंज मैट्रिक्स है तो उसके कॉन्जुगेसी क्लासेस को मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, पैरामीटराइज करना चाहता हूँ. We want to have some kind of a description of that. So the theorem was this, the theorem which we stated last time and we are trying to prove also is this, that let A be any member of SO plus 1n. So that is the matrix of this type. Then A is conjugate to a matrix of the form
matrix of the form this 1 0 0, and here is a matrix B such that B is in SO, this is n plus 1, so SON. So this is 1 0 0 0 1 0 0, and this B is a orthogonal matrix of determinant 1. So this is of the form this, or else it is of the form, it is of the form this form. So that is your here is your 2 cross 2 matrix cos hyperbolic say cos hyperbolic x here, and sine hyperbolic x here, sine hyperbolic x here, cos hyperbolic x here, hyperbolic x here, and here is another matrix B, and here is 0 0. So 0 0 0, 2 rows here. The first rows is cos hyperbolic x, sine hyperbolic x 0 0 0 0 0, and sine hyperbolic x cos hyperbolic 0 0 0, and this is 0, and this matrix B. So this is your 0 2 cross n minus 1 matrix, and this is n minus 1 cross 2 matrix, and this is n minus 1 cross n minus 1 matrix, which is orthogonal matrix. So this B is in SO n minus 1. This is B is in SO n minus 1. So this is the matrix. So this is the theorem. So the theorem is this. Let me again explain it here. If you take A to be any matrix SO plus 1 n, then A is conjugate in SO plus 1n. You see, this is that means there is a matrix in SO plus 1n, say P, such that PAP inverse is this or this. It is of the form this, or it is of the form this. So this is the theorem. Now remember, B is in SON. B is a special orthogonal matrix. And if you remember, a special orthogonal matrix, the conjugacy classes of a special orthogonal matrix we have already described. So what is the conjugacy class of a special orthogonal matrix? If you remember the something which we did for the orthogonal group. So what was that? That if it is a matrix SO1 n type matrix, then it is conjugate to a unique matrix, any matrix in ON. See, if you take any matrix in ON, then it is conjugate to a unique matrix of the type some 1 1 1 1 1 here, minus 1 minus 1 minus 1 in the diagonal here, and then certain rotations. So these are the identity, and this minus 1 corresponds to reflections, and here are the rotations. So cos theta 1 sine theta 1 cos theta sine theta 1 minus sine theta 1 cos theta 1, and so on. So that kind of block of rotation matrices, 2 cross 2 rotation matrices. And if we just put it, if you suitably arrange it, so 1 1 is the first 1 1 1, then the second minus 1 minus 1 minus 1, and then cos theta 1 sine theta 1 minus sine theta 1 cos theta 1 here, cos theta 2 sine theta 2 minus such that theta 1, you also order theta 1 less than or equal to, say here less than 0, less than pi, theta I less than pi, and order it here. So this is a unique matrix. And if so, the B is in SON. So if B is in SON, the determinant has to be 1. So if the determinant is 1, this minus 1 minus 1 minus 1 will appear 2 times. So even times, because the determinant is 1, and the rotation matrix का determinant 1 होता है, तो ये determinant 1 होने के लिए ये minus 1 2 बार appear होना चाहिए, right? So 2 बार appear होने का मतलब क्या हुआ? आप समझते हैं कि अगर 2 cross 2, so you can always write this matrix as minus 1 minus 1. So minus 1 ये 2 cross 2 का block
फिर मिल जाएगा आपको 2x2 का ब्लॉक मिल जाएगा। और 2x2 का ब्लॉक आप समझते हैं किस तरीके का होता है, cos pi, it is a cos pi sin pi minus sin pi cos pi. That is the so this can also be treated as some kind of this so 0 less than or equal to pi, you can put it over here. So this is a unique representation. So any member of SON is conjugate to a unique matrix of this type, and here it is this theorem. So that theorem simply says that we have every matrix A is conjugate to a unique, we have described uniquely conjugacy classes, the members of the conjugacy class. We have in fact selected one and only one member from each conjugacy classes of SO plus 1. कोई भी मैट्रिक्स A 1 यहाँ पे और फिर कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स आ गई, राइट, या 1 ये 2x2 का ब्लॉक यहाँ पे और फिर ये n-1 टाइप की इस तरीके की मैट्रिक्स आ जाए. So therefore you see here that any matrix in SO plus 1n is conjugate to one and only one matrix of this type. X is of course taken to be a real number, which is which you can take to be positive also. So that is this. So this is the theorem, and this is the theorem which we want to prove indeed, right? So this is the theorem, and the corollary is also here. I mean, I have written it. I'll send you sometime. I'm trying to complete it till the preferred group and spin groups. Once the spin group is completed, I'll send it to you. So so that is the theorem. I hope are you clear about it? Are you clear about the theorem, statement of the theorem? Hello? Is the statement clear? Yeah, audible है कि नहीं? Yes sir. है? ठीक है, ये विवेक, हेलो? यस सर, ठीक है सर. ठीक है सर. कोई भी मैट्रिक्स ए जो इस तरीके की मैट्रिक्स है जो डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो एक और मैट्रिक्स इस तरीके की मिलेगी. P said that PAP inverse is a matrix of either of this type or of this type, and it will be conjugate to one and only one matrix of this type, where B is also given as below here I have described. So this theorem was already done for special orthogonal matrices. ठीक है? तो right? Okay. So this is the theorem which we want to prove. So now A is in SO plus 1n. And we want to describe its conjugacy class. So now proof here. So proof is again similar, but it is a little involved here. So I'm trying to I'm giving the proof here. So let A be a member of S2 plus 1n. Right? Now treat A as a complex matrix. So A is a real n plus 1 cross n plus 1 matrix. So treat A as a complex matrix. So treat A as a complex matrix. Complex n plus 1 cross n plus 1 matrix. So A is a real matrix which can also be treated as n plus 1 cross n plus 1 matrix. And what we do here, we extend the Lorentz form, this on Rn plus 1 to a Hermitian form. Which let me denote it by this L star. So Lorentz Hermitian form by putting like this. So take any element on C to the power n plus 1. So how we do it? You take any complex vector x bar and y bar
and define this form L star here by putting this equal to minus x1 y1 bar, x2 y2 bar, and plus x2 y2 bar plus xn plus 1 yn plus 1 bar. Now there may be confusion here. You see, x bar here I am writing as a vector, x1 x2 xn. Y bar is a vector, y1 y2 yn, and all yi's are complex, xi's are complex. So so then x bar y bar star is defined to be this. So if x bar and y bar are real vectors, then it is just the usual x, y, l, the Lorentz form. And this can also be expressed, as you know, that x bar, and look at the matrix J1n, which is a real matrix, and this is y bar. This is y bar, and not only transpose. So x bar is a row vector and y bar is a column vector, and then not only the column vector, but it's a conjugate. So I'll write this as the conjugate as y bar transpose. Right, so y bar is vector is y1 bar, y2 bar is a column, and the bar is again you put the complex conjugation and then take the transpose. So this is this where J1n is, as usual, you know, J1n is minus 1 1 1 1. That is this is a symmetric matrix, which is also Hermitian. So this is a Hermitian form, and it is the extension of the usual Lorentz form. So this is the Lorentz form, and we borrow the terminology of the Lorentz situation here. The concept of time-like vector, space-like vector, and light-like vector. So a vector x bar in Cn plus 1 is a time-like vector. So here you see that this is not positive definite form. You see, Sylvester's law of inertia we have already done. That is also true for Hermitian form. So indeed here also you can describe all those groups just as we have described the O1n. So complex version of the this Lorentz group you can describe, but I'm not interested in that. You can describe using this. So the form, the matrices which keep this invariant, that can be called to be the Lorentz, complex Lorentz group. I'm not interested in that anyway. So this is a time-like, x bar is called a time-like vector if x bar, so x bar is a complex vector, L star is this is less than 0. So this is less than 0 means what? X bar is x1, x2, xn. This is x1, x2, xn. That means minus x1 square plus x2 square plus, see what is this x bar here? You see y is the x bar here. So minus x1 bar plus x2 bar and so on. So that is minus x1 modulus this square plus xn plus 1 square is less than 0, which is equivalent to say that x1 square is greater than x2 square plus so on plus xn plus 1 square. So then we say that it is time-like, and it is said to be, you recall, we again, and it is said to be a light-like vector if x bar L is equal to 0. That means x1 square equal to x2 square plus so on plus xn plus 1 square. So then it is your light-like vector. It is said to be space-like vector if xx is greater than 0. Is greater than 0. So that means this this x1 square
is less than x2 square. So these are the cases which are there, plus xn plus 1 square. So that is the time-like vector. It's in real case we had already seen that. So this is time-like vector. Now let A be any member of SO plus 1n. So look at its eigenvalues and eigenvectors. So eigenvalues and eigenvectors, considered it as a complex matrix. So naturally eigenvalue will exist and eigenvector will exist. So suppose A, so now there are several cases which we are going to discuss, and in that is what we are going to discuss. So suppose so it may have a time-like eigenvector, it may have light-like eigenvector, it may have a space-like eigenvector. So suppose A has a time-like eigenvector corresponding to an eigenvalue, to the eigenvalue, if the vector is already given. So suppose it has a time like eigenvector x bar, say here, corresponding to an eigenvalue lambda. So x bar is a time like eigenvector and corresponding to an eigenvalue this. So therefore what will happen here, x bar A. Now see here, this A is a Lorentz matrix. So Lorentz matrix means what? A Lorentz matrix and x bar is a complex vector. So what is this equal to? So let me explain it here. So this is equal to x bar, the vector x bar, which is a complex vector, and A, and what is this x bar and L and star. So by definition, this is J1n x bar A and bar and transpose. So that is the definition of that you see here. So and A is a real matrix. So remember here, this will be what? This will be simply x bar A, and this is a bar A bar, A capital A bar is A itself, because A is a real matrix. A is a member of SO1 plus 1. So this is what? So A, this is J1n and A transpose and A and x bar transpose. And so what is this? Now A was here. So that means this is J1n. So this is x bar J1n, right? J1n x bar transpose. So therefore you see, okay, so let me make it a little more general. I'm sorry. Put it y bar here for every y, x and y. So x bar A, y bar A will be equal to y bar here, and here is y bar star. So this is y bar. So that means this is your x bar, y bar, L star. So this simply means that this matrix A, which is a member here, that also preserves the extended Lorentz complex form. That preserves the extended Lorentz complex form. X bar, y bar के ऊपर लगाएंगे तो ये यही आ जाएगा. So that is this. So in particular, it also takes the time-like vector to time-like vectors and etc. So it preserves all those things here. So that is the A is a time-like. Suppose that A has a time-like vector this, then due to this, what will happen? You see here, so it preserves. So x bar A time-like, it's a time-like vector. So x bar A is what? You see, x bar A is lambda x bar. It is lambda x bar, and this is also, and x bar A, this is lambda x bar, but it is in the second coordinate and it is a Hermitian form. So lambda bar will come. So it is lambda bar. So this is equal to lambda bar into x bar. Right, lambda bar into x bar, right, L star.
Is it okay? And this is what? This is equal to A, you know, preserves the form. So this is your XL star, right? This is XXL star here. So that is the, so what will mean? Now you see, X is a time-like vector. Time-like vector means the norm of this is less than 0. This is less than 0. This is not 0. This is not 0. So this will mean that lambda, this is not 0. So that means lambda square is equal to 1. So lambda square is equal to 1. That is time-like vector here. But we want to say a little bit more about it. It will turn out to be real vector itself. So this is equal to this. Now, also look here. What is that? X bar A and X bar A. L star. Look at this thing. Look at this thing. So what is this equal to? See here. This is equal to A. X bar is an eigenvector of A. So X double bar is also an eigenvector of A, but the eigenvalue will be lambda bar. Am I right? So see here, X bar A is equal to lambda X bar, and A is a real matrix. So take bar. So if you take bar, so X bar A is a real matrix. So bar is the same thing as this. So therefore, this will be equal to lambda bar X bar. So lambda bar is also an eigenvector, and X bar is the corresponding is the eigenvalue corresponding to X bar here. So this is also there. So this is what? This is equal to lambda. Here lambda comes out here, and what is this? Lambda bar. Here is a lambda bar X bar. So lambda bar again Hermitian form. So lambda bar. So lambda bar will be lambda. So that will be lambda square. So this is lambda square X bar bar here. Am I right? So this is equal to this. But this is as A preserves the form. So this preserves the form. So therefore, what will be this equal to? This will be equal to X bar L star. See here. So this is your this is equal to this. Now look at this X bar star here. X bar. So what is X bar? X bar L star. What is this equal to? You see, suppose X bar is equal to X1, X2, Xn plus 1, then X bar is your X1 bar, X2 bar, Xn bar, and then you are taking again bar. So this is equal to minus X1 square plus X2 square plus Xn plus 1 square. Right? X bar is equal to this, and you see here this is equal to this. And look at this point, this thing, X bar and X bar L star is equal to 0 because it is less than 0. It is less than 0. This X bar is a time-like vector, no? So this is less than 0. So this simply means that X1 square is greater than X2 square plus X3 square. See, X bar is the real vector, and right. So X bar will be what? You see, what will be X bar? This is equal to minus X1, right? And okay, minus X1 and X1 bar. So this is minus X1 square is greater than this plus this. Am I clear? Right? You see, X bar is a time-like vector, time-like complex vector. Time-like complex vector means this thing is less than 0. So that means X bar आप समझ रहे हैं क्या होगा? X bar this is X1, X2, Xn so on, and X1, X2, Xn here, and then bar. So this is equal to this. This is something which you have observed earlier. So this is greater than 0. So X1, X2, Xn are complex numbers. Suppose X bar is a complex eigenvector. So X1, I mean, a priori there
is no reason we believe that it is a real one. So therefore, x1, x2, xn plus 1, they are all complex numbers which satisfy this property, equal to minus x1 square. So so this simply means that this is equal to this. Now I say, incidentally, let me make an assumption. Let me make an assumption here. See, सभी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए. X bar is a time-like vector, right? X bar is a time-like vector. So x1 cannot be 0, right? X1 cannot be 0, because if it is 0, this is 0. How can it be greater than something positive? So x1 cannot be 0. Now x1 cannot be 0, so then we can divide by x1 all coordinates to make x1 to be equal to 1, and the fact that it is an eigenvector will remain there. किसी भी आइगन वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आइगन वेक्टर ही रहेगा. तो therefore you see that I can assume that this x1 is 1 for simplicity. So we can assume, and you know that multiplying by x1 here will not change its nature also, that it is time-like vector or light-like vector or whatever, dividing by positive by x1 which is non-zero, right? So can assume that x1 is equal to 1, right? Okay, so that is equal to 1. X1 is equal to 1. So if you assume x1 equal to 1, so so then claim, here is claim, x bar, x double bar, L star cannot be 0. Why? Because if it is 0, it cannot be 0. For if so, this x1 is 1. So 1 will be equal to x2 square plus x3 square plus xn plus 1 square. And again here x1 mod is x1 is here, so this is 1 itself, but this is greater than mod x2 square plus x3 square plus xn plus 1 square. So this is greater than this here, and x2, x3, xn plus 1 are complex numbers. What I say that this is not possible if x bar is not a real vector. Claim that this is not 0 unless x bar is equal to x double bar. And that is also not there, because if x double bar is there, x bar is a time-like vector. We have assumed it to be a time-like vector. So this is less than 0. This is not 0, right? So this is there. And this is indeed a contradiction. It is not possible. This is not possible. Why? Because xj, you take xj here equal to aj plus ibj here. This I think I tried to explain last time. यहाँ पे हमने कुछ गलत थोड़ा बहुत explain नहीं किया था शायद. तो xj plus is equal to aj plus I bj. If you put it here, then 1 will be equal to what? 1 will be equal to real part. You know, aj plus I bj square equate the real part. Here it is real, and here it is complex. So that means the real part is aj square minus bj square, and sum j equal to 1 to 2 to n plus 1. That is this 1 here, and here 1 is greater than this. This greater than this means aj square plus so on, sigma aj square plus sigma bk square. So sigma aj square minus sigma bj square is equal to 1, and sigma aj square plus sigma bk square is equal to 1. How it is possible? This is not possible. Consider the ordering here. You cannot have unless this maybe you can say that bk's are 0. All bk's are 0. Even then, this is 1 and this is greater than 1. So this is self-contradictory. So therefore it is not 0, as you see here. So this is not 0. X bar L star is not 0. You clear? You get it. So this is not 0, right? Okay, so that is not 0.
So what? Where I wanted to explain here. Yeah, okay, yeah. Okay, so okay, so here what happens here, that that is not 0 and lambda was eigenvalue, no? हमने लिखा था कहीं ना, ये इक्वेशन लिखा था कि नहीं लिखा था? Lambda is, yeah, here it is there. See here, this is lambda square, right? This is lambda square x bar star is equal to this thing, and this is not 0. That is what we have observed. So therefore lambda square is 1. So this will simply mean that lambda square is 1. So this implies that lambda square is 1. Okay, and we have already observed that mod lambda square is equal to 1, but then here is lambda square is equal to 1. We have already observed, and this x bar is a in a way lambda square is 1, so that therefore lambda has to be a real number. See, is that right? So lambda square is 1. This implies right. You see here, here is your अरे क्या हो जा रहा है, ये कट क्यों जा रहा है? अभी था, अभी चला गया. हाँ, ये तो lambda square is 1 because this is something which cannot be 0 if x bar is a time like vector. So therefore this is lambda square is 1, and lambda square is 1 means lambda has to be real. It cannot be complex. Lambda square is 1, so lambda is a real number, and once lambda, so lambda is real. So lambda is real, and so x bar is also real. You got it? X bar is also real. The eigenvalue is real, the eigenvector has to be real because the matrix is real. And if the eigenvector is real, the eigenvalue has to be real. So lambda is real, so x bar is also real, and lambda square is 1. And you remember that A was a positive matrix. A was member of SO plus 1n. So that means what? A takes positive part to positive part. So lambda has to be 1 because it cannot take 1 positive. अगर eigenvalue lambda -1 है तो इधर 1 है, इधर माइनस से मल्टीप्लाई हो नहीं सकता है. So therefore this lambda has to be 1 because A belongs to this. So this also implies that lambda is equal to 1. So what we have proved so far is that if A is a matrix having a time-like eigenvector, then its eigenvalue is 1. And the eigenvector therefore also is a real vector. So we are in the real situation. We are in real situation. So this shows that lambda is 1, and if it has a time-like eigenvector, if it has a time-like eigenvector. So let x okay. So in that case, the proof goes as usual here. So let x be time-like eigenvector, and then the lambda is 1. That is something which you have proved. Lambda is 1, and then what you do? You look at x bar, the orthogonal complement. So it is not orthogonal complement to the usual Euclidean inner product. It is in the Lorentz situation. So x bar orthogonal complement, the Lorentz orthogonal complement. So what is this equal to? This is equal to y bar belonging to Rn plus 1, such that x bar y bar L is equal to, x bar is already real, so now real situation. So this is equal to 0. This is the orthogonal complement here, right? So this is orthogonal complement. Okay, ये क्या आ गया है? ये हमारा कर्सर जो है इधर-उधर चला जाता है. So x bar, this is the orthogonal complement. Now remember that x bar, the eigen subspace generated by the usual thing which I am doing. X bar intersection x bar, the subspace. So this is a subspace. You see here.
This is a subspace, and you remember here this is a time-like subspace. So those y bar belonging to Rn plus 1 which are orthogonal to a time-like vector, और ये हमने पहले प्रूव किया हुआ है जब ज्योमेट्री कर रहे थे तो उसमें प्रूव किया था कि कोई भी टाइम-लाइक आइगन वेक्टर के क्रॉस से लॉरेंज ऑर्थोगोनल वेक्टर हमेशा स्पेस-लाइक वेक्टर होगा. So this is a space-like vector R0. So this is a space-like subspace in a way. This is a subspace clearly. So this is equal to this, and this is equal to 0. This is equal to 0, right? So this is equal to 0, and if you take any say any u bar belonging to Rn plus 1, so what I want to say here that Rn plus 1 is indeed x bar, a direct sum of this vector. So this is of dimension n minus 1 to turn out to be. So intersection is already 0. All you have to prove is that u can be expressed in this form, which is that just the Gram-Schmidt process. So u bar is equal to you write u bar plus u bar x bar L and x bar. So let us take this x bar is a time-like vector, and what you do, you divide it by its norm. So make it a unit vector. So x bar L, so x bar, the inner product which should be -1. So -1 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या जाएगा, इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी आएगा, और उसका पॉजिटिव पार्ट हम ले रहे हैं, उसका मॉड ले रहे हैं. तो therefore this is something like unitary vector. So this is actually I'm putting mod here also. So therefore this is equal to this. So if you just take this x bar to be this thing, then x bar and call this to be u cap here, then x bar u cap will be 0. You can easily see that this is 0. This is Gram-Schmidt process. क्या orthogonal projection होता है या Lorentz projection है? So that is equal to 0. X bar cap is equal to 0, and so you see that x bar can be retained. This u bar can be retained. U bar can be retained as this element plus u bar minus this element. So therefore it is sum of an element of this plus an element of this. So therefore this is equal to this. So so you see that Rn plus 1 can be expressed in this way. So Rn plus 1 has been expressed in this way. This is a subspace which is invariant under A. This is a subspace like subspace which is invariant under A. They are Lorentz orthogonal. So what you do, you take a basis here. Take a basis here. So suppose you take a basis here. Suppose you take a basis something like okay. So suppose you take u2 bar and un plus 1 bar, and this is a space like subspace. You know, here the inner product is usually space like a subspace. So take an orthonormal basis here. Take an orthonormal basis here, and x bar को भी unit vector बना लीजिए. And यहाँ you take this x bar here, add this. So x bar is u1, so call it to be u1 bar here. So this is what? This is what? All these are orthogonal. This is a time-like vector which is orthogonal to all these. These are space-like unit vectors. So what is this? This is a Lorentz orthonormal basis. This is a Lorentz orthonormal basis. So if you take P to be a matrix whose rows is this u1 bar, which is x bar here, and u2 bar and un plus 1 bar. If you take this to be this matrix, then what will be PAP inverse? What will be PAP inverse? See, this is a Lorentz orthonormal. So PAPA ये सब eigen vectors हैं. Eigen vectors हैं ना? I mean, it's a you know, orthonormal basis. So some corresponding to some eigenvectors here. So what will be this? This will be simply equal to you have 1 0 0 b here. So that is the, so in this case it comes out to be of this form. If it has a time-like eigenvector. If it has a time-like eigenvector, it is the matrix is conjugate to this. Okay, that is there. So now suppose it has so in that case we are done. So if it is time-like vector, there is only one time-like vector, and indeed you see that this has intersection with the orthogonal ON plus 1.
1b, this is an orthogonal matrix also. If you remember, 1b is a orthogonal matrix, and determinant is 1. The determinant of this will be 1 because n plus a का भी determinant 1 था, तो यहाँ जो भी होगा orthogonal matrix, इसी the restriction of a to this was orthogonal, no? So that is why we could get that orthogonal matrix here. So that is the situation here. So in this case we have this here, and further b को भी diagonalize करके, I mean diagonalize क्या, वो जो orthogonal वो है उसमें करके फॉर्म में रख सकते हैं. So therefore this is there. So p is this. So now now the second case, let us assume that a has no a time like vector, इसका eigen vector कोई नहीं है. Let us suppose it has a light like eigen vector. So suppose now that a has a light like eigenvector, okay, a light like eigenvector x bar, right, x bar equal to x1 x2 xn, xn plus 1, corresponding to eigenvalue lambda. So now this is a light like eigenvector. So light like eigenvector means what? X bar L is equal to 0. This is equal to 0. So this is equal to 0 means what? X1 square is equal to X2 square plus so on plus xn plus 1 square, right? Minus x1 bar plus x2 bar plus xn bar is equal to 0. That is what we mean by light like vector here. So x bar is a light like vector and eigenvalue is lambda here. So therefore you see what happens. Okay, so the lambda is an eigenvalue here again. So I'm using the same kind of trick here. Okay, so let us so lambda and lambda bar here, and x bar L here. तो इससे तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो 0 होने वाला है ना. x बार L अगर हम ये लगाते हैं तो ठीक है, ये तो 0 है तो 0 हो जाएगा, तो कोई बात, हम चाहते हैं कि लैम्डा बार ये रखें इसको. तो लैम्डा, so here also you will be getting lambda bar here, x bar right. So what will be this equal to? This will be equal to okay, so x bar A and x double bar A, because lambda was eigenvector here and lambda bar was eigenvector of this thing. So this is equal to this L star here. So this is equal to x bar x double bar star here, right? Is that right? So this is equal to this thing is equal to this again here. And again I say, you see, it is always convenient to make to normalize it in some way by putting x1 is equal to 0. X1 is not x1 is equal to 1. You see, first observe that x1 is not 0. Then and only then you can divide. X1 is non-zero. Why? Because if x1 is equal to 0, this will be 0. This will be 0 means all these will be 0. And eigenvectors are non-zero members, non-zero vector. So this cannot be there. So x1 is non-zero, and dividing by x1, still it remains the eigenvector and light like eigenvector. So I can assume that x1 is 1. So assume again that x1 is 1 without any loss. Assume that x1 is 1. So if x1 is 1, so then you see here that x1 is 1. So again, what will happen to this thing here? X1 bar here. Again, the same thing will happen. So this will be equal to 1 equal to x2 square plus xn plus 1 square here. And I say that this cannot be 0 again. This cannot be 0 again, the same argument. Why? Because 1 is this, and if it is 0, then what will happen? It will happen that 1 is equal to x2 square plus xn square.
xn plus 1 square. There it was greater than that, but here it is, this is equal to 1 is equal, अगर ये 0 होता है तो, अगर ये 0 होता है तो ये है और ये भी है, इन दोनों से क्या फॉलो कर जाएगा कि x bar is real, the imaginary part is 0, so x bar will be real, is real, x bar is रियल। अगर ये 0 होता है तो x बार x डबल बार रियल हो जाएगा, और x बार अगर रियल हुआ, अगर x बार रियल हुआ तो लैम्डा को रियल होना पड़ेगा, तो लैम्डा रियल हो जाएगा, लैम्डा रियल हो जाएगा, ये नॉन जीरो है तो लैम्डा स्क्वायर 1 भी हो जाता है। बट एनीवे, एट लीस्ट दिस इज देयर दैट इफ इट इज 0 then x bar will be a real vector because x bar will be x bar, so that means lambda is real, so at least we can conclude that lambda is real. Okay, so so in this case lambda is real. I hope it is clear, lambda is real. So if it is a time-like vector, like vector, a lambda is real, and we can assume that x1 is 1 here, x1 is 1 here. Okay, so now let us take lambda is already real, and here this is equal to, अगर ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो होता तो खैर लैम्डा स्क्वायर 1 भी हो जाता, बट we don't know, the only thing is x bar is this thing. So lambda is real, that way we obtained that lambda is real. So now again, so x bar I can put it as 1, और एक नोटेशन मैं अक्सर यूज करता रहा हूं, जो आप लोगों को पहले भी हमने बताया था, शायद हमको कन्वीनियंट पड़ता है, कि x बार को हम लिख दें, द फर्स्ट कोऑर्डिनेट x बार is the first coordinate, यूक्लिडियन में जाने के लिए एक्चुअली हमें करते हैं ये कि x1 is the first coordinate x1, and the second coordinate जो है वो क्या है, वो x बार को एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें सेकंड कोऑर्डिनेट ऑनवर्ड, तो ये एक n+1 क्रॉस n मैट्रिक्स है जो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है, तो x बार p रखेंगे, तो एक्चुअली क्या है, x बार p जो है वो क्या है, x2 xn ही है, यही है, x2 xn plus 1 है सेकंड कोऑर्डिनेट दैट मैट्रिक्स, सो x1 x2 xn इज मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम इसको हम लिख रहे हैं, तो अब हम x1 को 1 मान लिए, तो x बार इज 1 एंड x बार p इस तरीके से हमें लिख रहे हैं, x बार को हमने ये लिया, lambda is real, the eigenvalue is real. Okay, so this is x bar. Now what I do, again I am using the same kind of trick, but here it is little involved, so that is what we have to do. So then I mean the proof is indeed in the same direction, but all the time you have to be careful while imitating the proof. So x bar, look at x bar O here. Again the orthogonal, the Lorentz orthogonal complement. So what will be this? This will be equal to y bar such that x bar y bar L is equal to 0. Real to ho hi gaya sab. So this is equal to 0. Right, this is a subspace obviously, but now this time it is not orthogonal to x, intersection is not trivial, because you know x bar is indeed contained in x bar, it's an orthogonal, so it's some kind of isotropy is here, so that is your x bar ओ, ये कंटेंट है, क्यों? क्योंकि x बार लाइट वेक्टर था, x बार लाइट वेक्टर था, मतलब ये 0 था, तो इसका मतलब x बार भी इसके अंदर है, तो अगर इसके अंदर नहीं रहा होता तो इसका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी लेते और फिर तो हम यूजुअल ट्रिक जो पहले करते आ रहे थे कर देते और काम हमारा बन जाता, लेकिन ये नहीं बन पा रहा है, तो x बार यहाँ पे ये इसके अंदर कंटेंट है, तो नेचुरली व्हाट विल बी द थिंग वी विश टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इन दिस, the complement of this in this, so that this becomes this plus certain space, that the complementary space उसको हम characterize करना चाहते हैं, वो क्या है, तो इसको आप मान लीजिए V है, suppose this is V, so V is your x bar star, the Lorentz orthogonal complement, this is a light vector, तो ये इसके अंदर कंटेंट है, एंड इसका हम इसमें ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट यूज करना चाहते हैं, सो व्हाट आई डू हियर, लेट अस कंसीडर दिस सब स्पेस, ये नेचुरली ये सब स्पेस कंसीडर कीजिए, राइट, x bar is 0 here,
राइट एंड इंडीड एक्स बार में हम 1 ले चुके हैं, इस कोऑर्डिनेट को आप ले लीजिए तो अच्छा है। तो इसमें क्या किया हमने कि इसको वेक्टर, वो वेक्टर ले रहे हैं 0 और एक वेक्टर ले रहे हैं W, 0 and W, right, 0 W, this is a vector such that W bar and X W and X bar P, X bar P क्या, तो ये W bar किसमें है, W bar जो है Rn में है, this is in Rn, am I right? एक W bar is in Rn and this is 0, the first quantity is 0, तो ये वेक्टर Rn plus 1 में हो गया, this is a सब स्पेस ऑफ Rn plus 1 and W bar हमने इसको ले लिया, W bar और X bar P भी ये Rn में है, X bar P हमने प्रोजेक्ट कर दिया था एक्शन में सेकंड क्वाड्रेंट से लेकर के, तो इसका यूक्लिडियन inner product I am putting it to be 0 here. And you know here that X bar was a light like vector. तो लाइट लाइक वेक्टर होने का मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस xn प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, लाइट लाइक वेक्टर था और ये पहला कोऑर्डिनेट 1 है, तो इसका मतलब ये x बार p यूनिट वेक्टर है, दिस इज a unit vector, this is equal to 1, this is a unit vector, so x bar p is a unit vector in Rn plus 1 Rn, so x bar p is a unit vector, so therefore what is this subspace W consisting of W, so this you can perhaps say that 0 class 0 cross the hyperplane determined by this unit vector perpendicular to this unit vector, so that is the hyperplane in Rn, which is your of dimension n minus 1 here. So what is the dimension of dimension of W here? So this is a subspace and the dimension of W is n minus 1, as you see. ये बिल्कुल क्लियर है, आप देख रहे होंगे, तो आई होप these things are all very natural and इमीडिएट कोई ऐसी खास बात नहीं है इसमें, आप लोग देखेंगे तो बहुत, और मैं भेज दूंगा आप लोगों को, मैं प्रॉपरली लिखने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई चीज वो न रहे, एंड फॉर रिव्यू ऑल्सो. So this is equal to W, and now remember here that x bar, x vector in x bar which is contained, and you see that W is contained in V, am I right? W is contained in V, right? Why x bar? So you know x bar, yeah, orthogonal complement x bar क्या था? X bar was 1 x bar p, so you just see that this is equal to 0 here. So w x bar, ये जो वेक्टर है x bar का, ये जो ये है w is contained in v, इसके मेंबर्स जितने भी हैं ये जो x के, ये x के ऑर्थोगोनल है, x के ऑर्थोगोनल है, right? Lorentz linear product में orthogonal है, because you know, because of this thing, so therefore that is orthogonal. So W is a subspace of this, and furthermore you see that V is your x direct sum W. V is x direct sum W. इसका इसके साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, x का इसके साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, इसी x में अल्फा है, अल्फा x है, और x1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 है, और ये तो 0 है, तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन इसके साथ ऑब्वियसली 0 हो गया, तो ये W जो है x के ऑर्थोगोनल भी था और इसका इंटरसेक्शन 0 है. So V, and furthermore if you take U to be any member, say that U and x bar is 0, U and x bar is 0, then what will happen? U1. So what will be this U? U will be U1 and UP, right? U1P और x bar, ये L सब जगह चल रहा है और x bar में 1 है, तो इसका मतलब U1 minus U bar P. Okay, so this is U bar. So U bar में से U1x को अगर घटा देंगे, U1x को घटा देंगे तो वही चीज आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये इसके साथ x बार p बचा रहेगा, उसके साथ 0 हो जाएगा ये, क्योंकि U बार डॉट p x p ये 0 था ही, यहाँ से 0 से U बार p डॉट x बार p 0 था ही, x बार p के साथ 0 था ही, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये मेंबर ये जो चीज है ये ऑलरेडी W में है, तो therefore U बार is equal to U1x प्लस इसको मान लीजिए, इसको आप U cap कह लीजिए, तो this is U cap, so therefore any member of V is of this type, so this is sum here.
ओके, थोड़ा सा इन्वॉल्व है लेकिन कोई खास बात नहीं है, थोड़ा आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू v इज इक्वल टू दिस। नाउ रिमेंबर हियर, ये बात आप ध्यान रखिए कि x बार को बहुत हमने सिंप्लीफाई किया है, और 1 दिस इज योर 1 x बार p है, एंड दिस इज ए यूनिट वेक्टर, दिस इज ए यूनिट वेक्टर। और ये क्या था, इसके वो जो कि इसके 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 ये वाले वेक्टर x के, तो ये x बार इज दिस थिंग एज यू सी हियर। ओके, तो अब हमारा x बार ये है, अभी ये हो गया है। अच्छा, ये क्या है, ये टाइम लाइक वेक्टर, ये लाइट लाइक वेक्टर था ना, तो 1 माइनस एक्स ये यूनिट वेक्टर था, ये लाइट लाइक वेक्टर था। तो अब क्या कीजिए कि एक दूसरा लाइट वेक्टर हम इसी, इफ यू जस्ट सी दिस कॉस हाइपरबोलिक, हमारा एम क्या है, कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और यहाँ ये मैट्रिक्स था। इसका अगर आप ध्यान देंगे तो ये 1 और 1 और 1 और -1, इसका ऑब्वियसली क्या है, आइगन वेक्टर है। ये आइगन वेक्टर है, ये लाइट लाइक आइगन वेक्टर है, ध्यान दीजिए, ये लाइट लाइक वेक्टर आइगन वेक्टर है 1, और ये लाइट लाइक आइगन वेक्टर 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। सो एंड दिस इज आल्सो -1 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ये लाइट लाइक वेक्टर्स हैं, और ये आइगन वेक्टर्स हैं। आइगन वेक्टर्स हैं किसके करस्पॉन्डिंग, मल्टीप्लाई कीजिए तो cos हाइपरबोलिक प्लस sin हाइपरबोलिक x, इसका आइगन वैल्यू होगा, और इसका आइगन वैल्यू होगा cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x, इसका आइगन वैल्यू होगा ये। तो एक्चुअली यहाँ पे देखिए 1, और ये x बार p वाला यहाँ 1 आ गया है, और उसके बाद सब 0। तो एक्चुअली यहाँ से अगर आप आइडिया देंगे तो ये प्रूफ का उसी तरीके से चला जा रहा है। तो एनीवे, तो x बार इज इक्वल टू दिस, एंड फॉर दिस एज यू नो यू टेक x बार, एक दूसरा वेक्टर ले लीजिए u बार विच इज योर 1 एंड माइनस x बार p, x बार p यूनिट। तो एक्चुअली क्या था, x बार p एक यूनिट वेक्टर था, और w में वो वेक्टर्स थे जो इसके ऑर्थोगोनल थे, और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर एक प्लस की तरफ मिलता है, एक माइनस, ओरिएंटेशन दो तरफ होता है, तो माइनस x बार वाले ले लिया हमने। तो ये भी तो एक वेक्टर है जो कि उसी तरीके की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इट विल सेटिस्फाई द सेम प्रॉपर्टी corresponding to this as you see. So therefore you see that u bar, and now you see that u bar ये भी इसी तरीके का वेक्टर है। तो u bar का जो हम लेंगे इसमें भी ये w कंटेंट होगा, और u बार इसमें भी, क्योंकि x बार माइनस एक्स बार डॉट पी से भी w क्या था, w और x बार p का प्रोडक्ट क्या था, 0 था, 0 w सच दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स बार p से भी तो 0 होगा, तो इसके लिए भी वही आया, w तो वही आया, लेकिन ये भी इस केस के लिए ये u और प्लस w ये आया, और प्लस क्या कीजिए कि इसी में मल्टीप्लाई कर इसमें ले लीजिए, सो टेक x बार एज वेल प्लस w, ये करिए। देखिए इसका इंटरसेक्शन भी 0 है, 1 x बार और इसका इंटरसेक्शन 0 है। क्यों इंटरसेक्शन 0 है बताइए, इसका इंटरसेक्शन, इसका कोई भी मल्टीपल इसका मल्टीपल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मल्टीपल कैसे बराबर हो सकता है, अनलेस दैट इज 0, एंड दिस इज ए यूनिट वेक्टर। सो देयरफॉर u और इसका इंटरसेक्शन भी 0 है, u इसका इंटरसेक्शन भी 0 है, और ये डायरेक्ट सम है। नाउ यू आर इन डायरेक्ट सम, ओके, ठीक है, डायरेक्ट सम हियर। नाउ व्हाट यू डू हियर, तो अब हम थोड़ा सा ओके, फिर मैं इसको और let me do here. तो this is the matrix, and you see here हम यहाँ से हिंट सब लिया जा सकता है anyway। तो चलिए है, तो x बार और x बार ये ली, तो एक बार आप ये कि इसका आइगन वैल्यू क्या था, लैम्डा था, इसका आइगन वैल्यू लैम्डा था, और इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा। ये एक बात ये ध्यान दीजिए कि ये u बार इसके ऑर्थोगोनल है, और जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 हो वो सिर्फ ये और यही है, और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। सो दिस u बार इज देयर, एंड इफ यू लुक एट दिस लैम्डा टाइम्स u बार, और इसमें ये a को मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा, एक बात ये ध्यान दीजिए कि x बार और u बार का जो इनर प्रोडक्ट है, जो लॉरेंज प्रोडक्ट है, वो क्या है, x बार 1 माइनस 1 प्लस दिस का इसके साथ इनर प्रोडक्ट, और ये यूनिट वेक्टर था, तो व्हाट विल बी दिस विल बी -2 हियर, दैट विल बी -2 हियर, एम आई राइट।
लैम्डा इसका इसका अगर लॉरेंज इनर प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 1 माइनस ऑफ 1 1 और माइनस ऑफ दिस ये माइनस है और ये यूनिट वेक्टर था, तो दैट मींस -1, so therefore that is -2. And look at lambda u and x bar here also, x bar this vector also. So if you look at this vector, what will be this equal to? This will be equal to lambda and x bar u bar a, u bar a L सब जगह चल रहा है, L चल रहा है। अच्छा, अब हम इसको A लॉरेंज मैट्रिक्स था तो हम इसको चाहते तो A को A इनवर्स यहाँ पर करके A इनवर्स करके इसको U हटा दे, जैसे आपने देखा हर्मिशियन फॉर्म में देखा होगा, इट इज जस्ट द सेम थिंग। सो देन अगर x बार का आइगन वेक्टर था लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, तो A इनवर्स का के करस्पॉन्डिंग इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, x बार A, ये था लैम्डा x बार, तो A इनवर्स अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स x जो होगा वो क्या आ जाएगा, लैम्डा इनवर्स x बार आ जाएगा, तो इसका आइगन वैल्यू लैम्डा इनवर्स आ जाएगा। सो दैट विल बी लैम्डा इनवर्स and x bar u which is equal to -2 again, because this is so this is again -2. So what will that mean, that this is a multiple of this and at the same time here is 1, so therefore क्या हुआ कि lambda u bar a ये u bar हो गया, इसका मतलब ये u bar is an eigenvector corresponding to eigenvalue lambda inverse, just as here you see that इसके corresponding eigenvalue cos hyperbolic x plus sin hyperbolic x था और इसके corresponding cos hyperbolic minus sin hyperbolic x है, तो cos hyperbolic minus sin hyperbolic x, cos hyperbolic x plus sin hyperbolic x का इनवर्स है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। So therefore you see that lambda u bar a is equal to u bar, तो it is a lambda inverse here, lambda inverse इसका ये है, राइट। अब क्या करिए कि इसमें अगर 1 कर, तो यहां से अगर आप हिंट ले लें तो हम थोड़ा सा अब यहाँ खा गए, कुछ खा रहे हैं क्या, लेकिन चलिए हम आप देख सकते हैं। तो नाउ x बार वाज 1 x बार p एंड u बार वाज 1 माइनस x बार p, राइट। अच्छा, तो अब क्या कीजिए कि इसके और ये जो W बचा है, W का एक ऑर्थोगोनल, ये क्या स्पेस लाइक है, तो इसमें एज यूजुअल W3n-1 इसके डायमेंशन था, तो Wn+1 इसके ऊपर ए का रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा, तो यू कैन टेक दिस टू बी एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ए के ऊपर ये ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सो यू कैन टेक W2 हियर इज अ बेसिस एंड व्हाट यू डू हियर, so with respect to x u bar and this, ये सब इसके ऑर्थोगोनल है, पहले ही आपने देख लिया कि ये ऑर्थोगोनल थे इसके। So therefore what will happen, what will be the matrix of this, if you take this to be the अगर x बार ये अगर आप p ले लेते हैं तो p a p इनवर्स क्या आ जाएगा, p a p इनवर्स क्या आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा थी, इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा इनवर्स थी, और ये मिला एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल गया जिसका डिटरमिनेंट 1 है क्योंकि लैम्डा इनवर्स 1 है, तो इस तरीके का आ जाएगा क्योंकि x बार का आइगन वैल्यू ये है, इसका आइगन, और ये सब आपस में ऑर्थोगोनल, लॉरेंज ऑर्थोगोनल, देख ली समझ रहे हैं, अभी लॉरेंज ऑर्थोगोनल ही इंडिपेंडेंट है, सो देयरफॉर you get this thing. So what you do here, the usual trick to make it, but you know हम well you see lambda inverse, ये मैट्रिक्स आप जानते हैं, lambda inverse क्या है, ये हमेशा SL2R का मेंबर है, और कभी हमने ये ऑब्जर्व किया रहा होगा कि ये जो SO11 है +11 है, ये SL2R ही है, ये बात है। तो चलिए खैर, तो ये जो हुआ PAP इनवर्स इज दिस, सो व्हाट यू डू, यू टेक x बार प्लस u बार बाय 2, इसको यूजुअल ट्रिक, you know, you take this to be W1 bar and W2 bar to be equal to x bar minus u bar upon 2. Now you see that this is a time-like vector. This will be time-like vector. As you see, 1 minus 1, 1 plus 1, 1 minus 1. इससे अगर आप कोएफिशिएंट्स सम करेंगे तो by 2 तो 1 0 आएगा. 1 0 time-like vector है. So right, this will be time-like vector in that case. So W1 bar is a time-like vector here, and it is orthogonal to this. Lorentz orthogonal to this. Easily you can see. और इसके तो orthogonal थे ही, W3 के onward तो orthogonal था ही. So therefore, you see that lambda W1 bar, W2 bar, and you take W3 bar as usual, Wn plus 1 bar.
ये ले लें तो अब ये मैट्रिक्स क्या मिलेगी, ये मैट्रिक्स जो मिलेगी ये देखिए ये क्या ऑर्थोगोनल है और ये यूनिट वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है और टाइम लाइक वेक्टर है और ये सब इसके ऑर्थोगोनल है यूनिट वेक्टर। तो ये मैट्रिक्स क्या मिलेगी, ये मैट्रिक्स मिलेगी हमको लॉरेंज मैट्रिक्स मिलेगी, डिटरमिनेंट ऑब्वियसली 1। तो ये लॉरेंज मैट्रिक्स मिलेगी और पी इनवर्स कितना होगा, पी इनवर्स क्या होगा इसका, अब इसका आएगा, इसको आप देख लीजिए, इसके आपको देखना पड़ेगा कि W1 बार A, इसको आप देख सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू x बार A क्या था, x बार A था लैम्डा x बार एंड u बार A क्या था, लैम्डा इनवर्स u बार था। तो अगर यहाँ पे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि W1 ये क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, लैम्डा x बार प्लस लैम्डा इनवर्स u बार अपॉन 2, ये आ जाएगा W1। इसको अगर सीधे सीधे लिखेंगे तो देख सकते हैं कि लैम्डा प्लस लैम्डा इनवर्स बाई 2 u बार W1 बार आएगा और प्लस हम थोड़ा सा इंट्यूशन से यूज कर ले रहे हैं, लैम्डा माइनस लैम्डा इनवर्स अपॉन 2 W2 बार आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये सीधे सीधे देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर a लगाएं, सॉरी a, हाँ W1 बार a ये लगाएंगे और W2 बार लगाएं a लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा इनवर्स बाई 2 W1 बार और लैम्डा प्लस लैम्डा इनवर्स बाई 2 W2 बार आ जाएगा। तो अब ए का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन W1 बार, W2 बार और W3 बार, इसके रिस्पेक्ट में तो ऑलरेडी बी था, यहाँ आ गया था बी, अब यहाँ का 2+2 वाला देखना था, ये सब ऑर्थोगोनल तो यहाँ तो 0 रहता ही इसका ऑर्थोगोनल। तो इसका मैट्रिक्स क्या बना, लैम्डा प्लस लैम्डा इनवर्स बाई 2 और लैम्डा माइनस लैम्डा इनवर्स बाई 2 एंड लैम्डा माइनस लैम्डा इनवर्स बाई 2 एंड लैम्डा प्लस लैम्डा इनवर्स बाई 2। और अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लैम्डा ऑलरेडी पॉजिटिव था, लैम्डा वाज पॉजिटिव दैट वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व। सो लैम्डा प्लस लैम्डा इनवर्स बाय 2, ये इसके लिए एक यूनिक कॉस हाइपरबोलिक, यू कैन पुट दिस टू बी द कॉस हाइपरबोलिक, दिस इज सॉल्यूशन, लैम्डा का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट एन x सो दैट cos hyperbolic x is equal to lambda plus lambda inverse by 2. You can solve it, lambda plus lambda inverse by 2, and then this square minus this square is 1, so you can see that this is sine hyperbolic, so this is sine hyperbolic, this is sine hyperbolic, and this is sine hyperbolic, this is cos hyperbolic. So therefore you see that in that case this turns out to be this, so therefore it is this thing, right? So that is the representation here if it has a time-like vector. Now if it has a space-like eigenvector, there is no time-like eigenvector and there is no light-like eigenvector. Sorry, this was for light-like vector. Time-like vector के लिए तो usual 1 भी ये था. So this is for light-like vector. If you eigenvector, you see, so you get this as the matrix will be conjugate to a matrix of this space-like vectors. Suppose it has no eigenvectors corresponding to eigenvector which is time-like or light-like, then all eigenvectors are space-like, and in that case perhaps the usual proof will work. I am already running आउट ऑफ टाइम, तो उसका भी हम जल्दी से नेक्स्ट टाइम बता देंगे। और उसके बाद हम आएंगे जो एक बहुत वैसी रिजल्ट हमने किया था कि इसका जनरलाइजेशन जिसको कहते हैं कि हिमाद्री ने एक ह्यूरोविच थ्योरम प्रूव किया था कि 4 डायमेंशनल अलजेब्रास को नॉर्मल अलजेब्रास को ऑर्थोगोनल अलजेब्रास को प्लस वो किया था, proved it, and then we also had that S3 से SO2 में हमने देखा था ये डबल कवरिंग। तो अब इसको हम ये पार्ट को करेंगे और वो उसके लिए हमको थोड़ा सा क्लिफोर्ड टेक्निक की बात करनी पड़ेगी एंड स्पिन ग्रुप। सो दैट विल बी लास्ट फॉर आवर क्लासिकल ग्रुप्स। जितने भी क्लासिकल ग्रुप्स हैं ओवर रियल्स, फाइनाइट फील्ड के लिए पर हमने नहीं किया है, फाइनाइट फील्ड के लिए कभी बाद में थोड़ा सा देखा जाएगा, लेकिन ओवर रियल्स एंड कॉम्प्लेक्स ये हो जाएगा। तो हमारा एम ये होगा, लेकिन एनीवे सो दिस इज द थिंग। अब इसके कॉन्जुगेसी क्लासेस हमने डिस्क्राइब कर दिए हैं एंड यू नो दैट रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में कॉन्जुगेसी क्लासेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इनफैक्ट वेरी फंडामेंटल रोल फॉर दिस, एंड ऑफ कोर्स द रिप्रेजेंटेशन थ्योरी ऑफ दिस लॉरेंज ग्रुप इज अ लिटिल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स SL2R व्हिच इज नॉट ए कॉम्पैक्ट ग्रुप। तो कॉम्पैक्ट ग्रुप नहीं है तो इसके अंदर कॉम्पैक्ट सब ग्रुप ये थोड़ा सा वो हो जाता है,
और several other things जिसको हम लोग देखें, शायद उसके ऊपर बाद में आएंगे. तो दिस विल एक्चुअली डिस्क्राइब द क्लासिकल ग्रुप अलजेब्राइक पार्ट, और इसके बाद थोड़ा सा हम इसका टोपोलॉजिकल एंड थ्योरेटिक पार्ट करके क्लासिकल ग्रुप्स को हम फिनिश करेंगे, एंड देन वी कम टू द रिप्रेजेंटेशन थ्योरी. सो दैट इज द, आई एम सॉरी आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम. हेलो. हाँ, थैंक यू सर. और बहुत डिटेल में जो है आपने चीजों को किया है, और बिल्कुल हम लोग जो है इस पर कैलकुलेशंस करेंगे, जब तक नहीं तब तक सीख तो नहीं हम पाएंगे. इसको भेज रहे ये हैं, कई बार हमने देखेंगे कहा. और वेरीफाई करके भी देख जी. लें, और थोड़ी सी आइडिया भी कि कैसे हो रहा है, क्यों ये हो रहा है, ये सब चीजें थोड़ी सी समझने की चीज है. और काफी मोटिवेटिंग भी है, लेकिन पता नहीं हमें मोटिवेट किया नहीं किया, नहीं शायद लग पाए, लेकिन प्रूफ जो है वो ये है. तो अब ये हम भेज देंगे. हमने तो इसको तो वो ही नहीं किया जो हमारा ये था, ये जी, इसमें है जो आपने पीडीएफ तैयार किया हुआ था, PDF. और बिल्कुल आप लिख करके करते हैं तो हम लोग के लिए ज्यादा बेहतर लगता है. बेटर यही है, क्योंकि वो अदरवाइज मैं पढ़ने लगता हूँ और मेरा दिमाग कहीं काम नहीं करता है. मैं उसी में खो जाता हूँ कि मैं तो पढ़ रहा हूँ इसको, फिर और फिर उसमें हाँ एक आध चीज ये है कि हम फिर देखेंगे तो उसमें गलती पकड़ में थोड़ी थोड़ी शायद कुछ समझ में आ जाए, तो ये जी जी. है. तो ठीक है. तो एनीवे सॉरी. ठीक है. तो ठीक है सर. हम इसको भेज देंगे, जल्दी ही भेज देंगे, और बस एक अंत ठीक तक हम पहुंच ठीक, गए हैं, बिल्कुल. भेज देंगे. क्लासिकल ग्रुप से ऑलमोस्ट डन. ठीक है सर. और उसके बाद फिर आप लोग उसके बाद भी चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं. जी बिल्कुल. तो थैंक यू ऑल ऑफ यू for participating in this seminar. Next Friday we will meet at 3:30 p.m. Thank you all of you. Thank you, sir. Thank you all. Thank you all.